داؤدی صاحب میری جان جو ہے وہ آپ پر قربان ہو. صدام سر جو ہے یہ ایک ایسے ٹیچر ہے, میں نے دیکھا ہے. یہ جملہ بڑا اچھا لگا مجھے بہت ہلکا, اور اس کے لیے آپ کو انعام چاہیے اور 500 روپے میں آپ کو اپنی طرف سے دیتا ہوں. یہ بڑا جملہ پیارا ہے, دل میں گھس کر کے پڑا. کیا مطلب؟ اور میں داؤدی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہاں پر ایک ایسا پروگرام لایا جس سے ہمیں آسانی ہوئی کہ ہم اپنی زندگی جو ہے آگے بڑھا سکیں. In the name of Allah, the most merciful and the most powerful, and the King of the Day of the Judgment, Honorable Hazrat Allama wa Maulana Sheikh Al-Haj Abdul Rashid Dawoodi Sahab, respected Maulana Fayaz Ahmad Rizvi Sahab, Maulana Ulfat Raza Misbahi Sahab, and all the educated teachers, my dear friends and guests. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is 27th of November 2025 and it's me, Dar Shamif, one of the student of Idara Sautul Awliya. My dear friends, you know I came to Idara Sautul Awliya to take Deeni Taaleem, Quran Hidayah. Alhamdulillah, I learned Iman, Adab, Ikhlaq. But suddenly Allah Ta'ala sent someone to give us Dunyavi Taaleem also, and that is Saddam sir, whom Dawoodi Sahab brought from Mumbai to give us confidence, to give us, to learn us, to give us the speak, to make us confident. So my dear friends, before I meet Saddam sir, I used to feel shy. I could not speak confidently, but now I can speak confidently. I have a confidence. So my dear friends, after meeting him, I am speaking English. I learned communication, I learned goal settings, I learned business, etc. He taught me that the business is not haram, it's halal in Islam. Also the Prophet is Sunnah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the honest and the truthworthy businessman will be with the prophets on the day of judgment. Say Subhanallah everyone. So that he taught us what the Quran says. Quran says Iqra. Quran says Iqra. Iqra means learn, read, and achieve your goals. What's your goal? You want to become a businessman. You want to achieve something. You want to do something for your family. So that he taught us what the Quran says. Quran says Iqra. Learn, read, and grow. I am here because of Saddam sir. So I am here because of Saddam sir. You know that he gives us the confidence, and I can have a dream of becoming a good Muslim, a responsible Muslim. I have to do something for my family, and I am going to thank you, Dawoodi Sahab, for giving us the opportunity. Also the Saddam sir, the Madrasa Idara Sautul Awliya, for giving us the way that we can learn Arabic, that we can learn Quran. So I am going to also thank Saddam sir, who gave us the skills that we can achieve your goals. We can achieve our goals. اور میں داؤدی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہاں پر ایک ایسا پروگرام لایا جس سے ہمیں آسانی ہوئی کہ ہم اپنی زندگی جو ہے آگے بڑھا سکیں. داؤدی صاحب, میری جان جو ہے وہ آپ پر قربان ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ داؤدی صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہمارے لیے کیا. He took step for us, not for them. So صدام سر جو ہے یہ ایک ایسے ٹیچر ہے, میں نے دیکھا ہے جو ایسے ٹیچر ہے. میں اس سے پہلے بھی پڑھتا تھا, میں پہلے پڑھتا تھا یہاں بجبیارہ میں. سو وہاں پر ہمیں استاد جو تھے سکھاتے تھے, بٹ ناٹ دیٹ ٹائپ جیسے صدام سر ہمیں سکھاتے ہیں. وہ مارتے تھے, پیٹتے تھے تو ہم سیکھتے تھے.
बट सद्दाम सर ने क्या किया, वो हमारे दिल में घुस गए. ही टेक प्लेस इन अवर हार्ट्स. वो हमारे दिल में घुस गए. जब हमारे दिल में घुस गए तो उन्होंने वहां पर एक जगह बनाई, और जगह बनाने के बाद हमारे साथ मोहब्बत की और हमें कुछ सिखाया. उन्होंने इंग्लिश नहीं सिखाया, उन्होंने हमें मोहब्बत सिखाया और इंग्लिश सिखाया और बहुत कुछ सिखाया. हाउ वी कैन मेक ए बिजनेस, हाउ वी कैन अचीव आवर गोल्स. और उसने हमारी जिंदगी में एक ऐसा मतलब पॉइंट पिन किया जो कि ये है, उसने कहा, उसने हमें एक मोटिवेशन दी जो कि ऐसे है कि उसने कहा तुम्हें अपने लिए, अगर छोड़ो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने माँ बाप का सोचो. कैसे तुम्हारा बाप जो है दिन भर काम करता रहता है, धूप में काम करता है और तुम्हारे लिए करता है, बस तुम्हारे लिए, और कहता है कि मेरा बच्चा कुछ कल करेगा, और उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए. और मैं दाऊदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. ये जुमला बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, और इसके लिए आपको इनाम चाहिए और 500 रुपये में आपको अपनी तरफ से जज़ाकल्लाह. ये बड़ा जुमला प्यारा है, दिल में घुस करके पड़ा. क्या मतलब? मोहब्बत दिल में बिठाना है. उस्ताद की दिल में जब मोहब्बत उतरेगी, लेकिन ये सारा काम उस्ताद ही का होता है. उस्ताद माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ उस्ताद होता है. लेकिन जब उस्ताद बन जाए, क्या बात है, तो दिल में उस्ताद उतरेगा, फिर उसकी बात भी खुद ब खुद उतरेगी, फिर उसका हया, उसका अदब खुद ब खुद बच्चे में आ जाएगा. अब मुझे कोई उस्तादों करने में वो डंडू से नहीं पढ़ा, और जिन्होंने डंडू से पढ़ा है उनको भागना पड़ा वहां से. लेकिन जिन्होंने मोहब्बतों से पढ़ा है, आज भी हम उनके चप्पल जूता उठाने के लिए, सीने से लगाने के लिए तैयार. आज भी हम उनका अदब करने को तैयार.